Charter Act of 1909 was certainly very revolutionary in view of constitutional development. It not only expanded legislature, but it also provided bicameral legislature in center and in some states. As well, by this act, the number of non-government members in legislature increased, number of elected members increased, and now we see majority of elected members in legislatures. 1919 का कानून निस्संदेह क्रांतिकारी था और अनेक पूर्व की मांगों को माना गया था। इसके द्वारा न केवल विधायिका का विस्तार हुआ, अपितु केंद्र और प्रांत दोनों स्थानों पर गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ी, निर्वाचित सदस्यों का बहुमत प्राप्त हुआ। यही नहीं, बाय दिस एक्ट डायरकी रूल प्रोवाइडेड इन प्रोविंसेज, which means the subjects of provinces has been divided into two, transferred and reserved subject. On transferred subjects, the responsibility given to ministers who were Indians, who were elected, who can be non-government members. इस कानून की सबसे प्रमुख विशेषता यह रही कि इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। द्वैध शासन के तहत प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित में विभाजित करके हस्तांतरित विषयों को मंत्रियों के अधीन किया गया और ये मंत्री गैर सरकारी सदस्य हो सकते थे, निर्वाचित सदस्य हो सकते थे। इस प्रकार पहली बार भारतीयों को प्रांतीय स्तर पर शासन करने का अधिकार मिला। Thus, for the first time, Indian got the power to rule, the responsibility to rule in provinces. इसके बावजूद भी, in spite of this, Indian National Congress and main wave of national movement rejected this act. Why? इसके बावजूद भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा ने इस कानून को निरस्त कर दिया। इसके पीछे मुख्य कारण ये थे कि अब हमारे एस्पिरेशंस बढ़ चुके थे। वी वर एक्सपेक्टिंग समथिंग मच मोर, वी वर एक्सपेक्टिंग सेल्फ रूल एंड मोर ओवर थ्रू रॉलेट एक्ट गवर्नमेंट ट्राइड टू सप्रेस अस। Jallianwala Bagh massacre occurred and there was atrocities by government in Punjab and British government was intervening in religious affairs of Muslims. So among we all there were dissatisfactions with British government, so that Indian National Congress rejected this act and it started. Firstly, Khilafat movement was started and later on non-cooperation movement started with the sole object of to end atrocities in Punjab, to stop intervention by government in religious affairs of Muslims, and thirdly for self-rule. Thus, under the Act of 1919, the mainstream didn't participate in election, though a group of Congress members formed Swaraj Dal in leadership of Motilal and Deshbandhu Chittaranjan Das, and they entered in legislature. Thank you.